Yes, Assalamu alaikum, dear grade 9 students. This is your biology teacher, Ms. Hina Zahid. Waiting for a few more students to join me now. Yes, Vanya, how are you? Okay, mashallah. So am I loud and clear to you? Alishba, how are you, beta? Alhamdulillah, I'm also good. Thank you, Vanya. So let's begin up. In the name of Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Let's reinforce a little. हम देखें कि हमने ये लेसन कहाँ से स्टार्ट किया था, लास्ट क्लास में हमने क्या स्टडी किया था. So I welcome you to class 9 biology class here today again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. We are dealing with chapter 2 and the title of chapter 2 is Structural Organization of Life. Lesson 8 was started and we have studied in lesson 8 that what are unicellular organisms. The unicellular organisms are the organisms which consist of only a single cell. We have found that there are different types of unicellular organisms like amoeba, paramecium, and euglena. Okay, so here we can see that there are different types of unicellular organisms and we have studied amoeba in detail. This picture I have shown you these pictures of amoeba. Here it is another picture of amoeba. We have already done with this part, but we are just reinforcing what we have studied in the previous class. Then we started brassica. We started to learn about multicellular organisms. And I told you that we have to learn about two multicellular organisms. The first multicellular organism is a plant that we have selected, that is Brassica campestris. Brassica campestris is the example of multicellular plant. So Brassica campestris, I have shown you the leaves of the Brassica. We have already studied about the internal structure of the stem of Brassica, the internal structure of root of Brassica here. This was the last slide I have shown in the previous class. Now in today's class, we have to begin up with a new part, that is the leaf of Brassica campestris. Let's find out what are the leaves of Brassica campestris look like. The leaf of Brassica campestris is like this. You can see the solan veins in the leaf, and these veins are actually the vascular bundles. These veins carry vascular bundles, the expanded part, and you can see that the margins are wavy. The margins of the leaves are wavy. So let's find out what are the characteristic features of the leaf of Brassica campestris. The leaves of Brassica grow on stem at nodes. Nodes मैंने आपको बताया था. Nodes are the solan parts on the stem. हमें stem पे कुछ solan parts नजर आते हैं. वो जो solan parts होते हैं, जो सूजा हुआ part होता है, that is called nodes. और nodes में से क्या arise होते हैं? Leaves arise होते हैं.
So the leaves of Brassica arise from the nodes. In your book, this topic is mentioned at page number 47. Now the next point here is, generally the leaf of Brassica consists of two parts. One is petiole and second is lamina. And the third point, petiole. Petiole is the short stalk-like part of a leaf. Petiole वो short stalk होता है जिसकी मदद से leaf stem के साथ जुड़ा हुआ होता है. And lamina is the extended part of the leaf. Lamina वो part होता है leaf का जो extended part है, जो expanded part है. The margin of mature leaves is wavy or irregular. The swollen vein in the middle part of the leaf is called midrib, from which many branches emerge. The veins contain vascular tissues. Veins के अंदर vascular tissues होते हैं. And the network of veins support the leaf and they keep the lamina expanded. What is the function of leaf? The function of leaf is to prepare food. So the leaves of Brassica grow on stem at the nodes. तैयब मैं शुरू से ही explain कर रही हूँ. This is the first slide I am explaining. The leaves of Brassica grow on stem at nodes. Nodes पे से leaves arise होते हैं. Nodes वो swollen region होता है stem के ऊपर. Generally, the leaf consists of two parts. Leaf के दो parts होते हैं. एक तो आपने छोटा सा stalk देखा होगा. If you can open up your books at page number 47, you can see figure 2.29. This figure 2.29 shows the petiole. आपको छोटा सा एक stalk नजर आ रहा है जो कि petiole है. ये petiole क्या करेगा? Leaf को stem के साथ connect करेगा. The second part, which is extended and expanded part of the leaf, is called lamina. जो फैला हुआ हिस्सा होता है लीफ का वो लैमिना होता है. The margin of mature leaves. अगर तो leaves immature हैं, young leaves हैं, तो उनके margins कैसे होते हैं? Usually smooth होते हैं. लेकिन mature leaves के जो margins होंगे वो wavy होंगे यानी irregular होंगे. The swollen vein in the middle part of the leaf is called midrib. जो main vein होती है, अगर आप leaves के अंदर एक देखें तो एक vein run कर रही होती है. That main vein is called midrib. और इस midrib में से बहुत सारी branches emerge हो रही होती हैं, branches निकल रही होती हैं. These veins contain vascular tissues. Vascular tissues कौन कौन से होते हैं? Xylem and phloem. So the network of veins, in network of veins का क्या function होता है? The function of these network of veins is to support the leaf and keep the lamina expanded. The function of leaf is to prepare food. As we know that green parts of the plant body prepare food with the help of photosynthesis. और leaves हमें green क्यों नजर आते हैं? Leaves are green due to the presence of a pigment, green pigment, which is called chlorophyll. Now let's find out what is the internal structure of leaf. Here I have selected this picture to explain you the internal structure of leaf. Here you can see the yellow part. Can you see this yellow part? This yellow part is actually showing upper epidermis. Upper epidermis. And can you see the arrangement of cells in upper epidermis? ये बिल्कुल upper outermost part होता है leaf का और ये epidermal cells से बना होता है. Upper epidermis के ऊपर आपको एक cuticle भी नजर आ रही है. This is waxy substance. ये एक waxy layer होती है जो epidermis को protect करती है. What is the function of cuticle? The function of cuticle is to protect the epidermis
अगर बहुत ज्यादा हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं, जैसे आपको पता है कि प्लांट्स तो सोलर रेडिएशंस के अंदर ही रहते हैं और पूरा पूरा जो दिन होता है प्लांट्स का वो सनलाइट के अंदर ही स्पेंड हो जाता है। तो बहुत सारी सोलर रेडिएशंस ऐसी हैं जो कि इसको बर्न कर सकती हैं, एपिडर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, लीव्स बर्न हो सकते हैं। इसलिए क्यूटिकल क्या करेगी, एपिडर्मल सेल्स को प्रोटेक्ट करेगी। इसके साथ साथ क्यूटिकल का एक और फंक्शन ये है कि जो एक्सेस वाटर है, जो वाटर होता है लीफ के अंदर, वो कम से कम इवेपोरेट हो, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा इवेपोरेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाएगी, तो फिर प्लांट विल्ट कर जाएगा, मुरझा जाएगा। So the cuticle is to protect the leaf as well as to prevent the excess transpiration. What is transpiration? Transpiration is the process during which plants remove out excess water from their aerial parts. Aerial parts वो parts जो हवा में मौजूद हैं। Now let's find out what is palisade mesophyll cells. Here we can see palisade mesophyll cells. Okay, what are these palisade mesophyll cells? This is the palisade mesophyll cells. Here it is written palisade mesophyll cells. एपिडर्मिस के अलावा ये जो पूरा पार्ट है, this is mesophyll part. This whole part is mesophyll part. Okay, and here you can see the vascular bundles. These are the vascular bundles. ये जो वेन्स पास हो रही होती हैं हमारे लीव्स में से, ये वो वेन्स के अंदर वैस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। और यहाँ आपको पैलिसेड मेसोफिल, जो हमारा ये पूरा मेसोफिल वाला पार्ट है, दिस पार्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू पैलिसेड मेसोफिल पार्ट एंड स्पंजी मेसोफिल पार्ट। ओके, पैलिसेड एंड स्पंजी। सो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं? बहुत ज्यादा क्लोज हैं और ये बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस हैं। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स के नीचे जो आपको स्पंजी सेल्स नजर आ रहे हैं, these स्पंजी सेल्स आर लूजली हेल्ड। ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब नहीं हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं और इसके साथ साथ इनके दरमियान कुछ स्पेसेस भी ज्यादा हैं। That's why they are called spongy mesophyll cells. Are you getting the concept? So the epidermis and palisade mesophyll cells, the spongy mesophyll cells. Now the vascular bundles तो veins में मौजूद होंगे, ठीक है? Another thing is the lower epidermis here. It is the lower epidermis. The lower epidermis also contains the epidermal cells. This is the lower epidermis. Okay, this is the lower epidermis. This lower epidermis is also consisting of epidermal cells. और इसके नीचे भी एक thin लेयर होगी क्यूटिकल की, लेकिन जो अपर एपिडर्मिस पे क्यूटिकल लेयर है, that is thicker than the cuticle which is present at the lower epidermis. एक और जो डिफरेंस है अपर और लोअर एपिडर्मिस का, वो क्या है? Another difference is that the upper epidermis has less stomata and lower epidermis has large number of stomata. This is another difference between upper and lower epidermis.
अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा बहुत थोड़े थोड़े से होंगे, बहुत कम होंगे, एंड लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा बहुत ज्यादा हैं. Why is this so? And what are stomata? So let's find out stomata. Stomata is the plural of stoma. What is a stoma? Stoma is a pore. Stoma is a pore. So stomata are the pores through which the gases can move into the leaf and they can leave it. गैसेस एटमॉस्फेयर से लीव्स के अंदर भी जा सकती हैं स्टोमेटा के जरिए, और लीफ के अंदर से बाहर भी आ सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, लीव्स के अंदर क्योंकि ग्रीन सेल्स मौजूद हैं और लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है. फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस किस चीज की जरूरत होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की. वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए लीफ के अंदर चले जाएंगे और जो एक्सेस वाटर होगा लीफ के अंदर वो स्टोमेटा के जरिए बाहर आ जाएगा. सिमिलरली जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, वो भी स्टोमेटा के जरिए एटमॉस्फेयर में भेज दी जाएगी. So stomata are the pores through which the exchange of gases takes place. So lower epidermis पे स्टोमेटा ज्यादा क्यों होते हैं? इसलिए कि अपर एपिडर्मिस तो सन एक्सपोजर में रहती है ज्यादा, और अगर हम ऊपर वाली एपिडर्मिस पे स्टोमेटा ज्यादा होते तो हम ये देखते कि प्लांट तो बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाती और बहुत जल्दी से उसके अंदर से सारा वाटर इवेपोरेट आउट हो जाता. इसलिए लोअर एपिडर्मिस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होते हैं ताकि कम से कम ट्रांसपायरेशन हो सके और गैसियस एक्सचेंज भी हो सके. So this was the internal structure of leaf. Now I am going to show you the picture which is given at page number 47 in your book. This is the picture which is titled as transverse section of leaf. This picture is given in your book, and here it is shown that the upper epidermis is covered with a cuticle. Then next to the upper epidermis we have palisade mesophyll cells. Next to the palisade mesophyll cells we have spongy mesophyll layer, and after that the lower epidermis. You can see xylem and phloem tissue which are in the center of the leaf, and they are the vascular bundles. Got it? Any questions here? Okay, Alishba has no questions. Any other students? Sidra, Dania, Tayyab? Okay, Sumaya has no question. All right. So if there is no other question, if it is all clear, we should move to page number 48 in our book. Now we'll study about the points which are given about internal structure of leaf. This is given epidermis. Epidermis, epi means outer, dermis means layer. So epidermis is the layer of cells which are present at the outer side, outer surface, the outer side. Arisha, I have shared the contact number. Arisha, I have shared the contact number through broadcast group. I'll share it to you again, okay? So the internal structure of leaf, the upper layer of the cells on the leaf is called upper epidermis. Lower layer of leaf is called lower epidermis. The lower epidermis contains pores called stomata, which are protected by guard cells. These stomata open and close so that the gases and water can move in and out of the leaf.
The tissue between upper and lower epidermis is called mesophyll. The mesophyll cells below the upper epidermis are longer and are closely packed. This layer is called palisade layer. The cells next to this palisade layer are loosely held and of irregular shape. They are called spongy layer. The photosynthesis takes place in palisade as well as mesophyll cells. The veins support the leaf and contain vascular bundles to transport the materials. Yes, सेल्फ स्टडी को आप अपनी नोटबुक में कीजिए ताकि आपकी साथ साथ प्रिपरेशन होती रहे. हम सिर्फ याद करने से खुद को प्रिपेयर नहीं कर सकते एग्जाम्स के लिए. हमें एक्सप्रेशन डेवलप करना जरूरी है. आपने सिर्फ याद किया और अगर लिखा नहीं या आपने नोट्स डिजाइन नहीं किए खुद से, आपने बुक में से अगर क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट नहीं किया, तो इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन अधूरी है और आपको बहुत अच्छे से मार्क्स नहीं मिल सकते. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर्स आपको जिस तरीके से गाइड करें आप उसको ओबे करें, और जो कुछ भी आप वर्किंग अपनी नोटबुक्स में करेंगे वो टीचर को चेक जरूर करवाइए ताकि टीचर आपको इन टाइम प्रिपेयर कर सकें कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. नाउ वी हैव डन विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. अब आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको पॉइंट्स में शो किया है हर चीज को, आप भी कोशिश ही करेंगे कि जब भी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को एक्सप्लेन करेंगे या किसी भी एक्सप्लेनेटरी पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो उसको पॉइंट्स में मेंशन करेंगे. कोशिश कीजिए कि पैराग्राफ फॉर्म में ना हो. पीडीएफ का जो पीडीएफ आपको शेयर किया है उसको आप नोटबुक में कॉपी डाउन नहीं कीजिएगा, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने आपको असाइन किए हैं वो आप नोटबुक में सर्च करके खुद से उनके आंसर्स डिजाइन करें. So I am moving on to the next part, that is flower. Flower is the reproductive part of plant. All the plants which bear flowers are highly developed. So Brassica campestris also bears flowers. This picture shows the flower of Brassica. You can see there are various parts of the flower shown. The flower is connected to the, yes, diagrams मैं आपको बेटा अलग से बताऊंगी. 2 chapters जब आपके complete हो जाएंगे, after the completion of 2 chapters, I'll give you all the important questions and all the important diagrams, differences, each and everything will be given to you ताकि आप उसकी प्रिपरेशन कर सकें आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 chapters, every 2 chapters. Now flower of Brassica campestris. Sidra, I think it's something, there is some disturbance at your side, Sidra. So flower of Brassica campestris. Here in this picture, picture A, it shows the internal structure of the flower. You can see the outermost part, which is sepals. You can see the stamens. You can see the petals and the carpel. In picture C, the color of the flower is yellow, and you can see the stigma, the anthers, the sepals, stamens. Okay, so the flower of Brassica is somewhat like this. Let's find out what are the main parts of a flower. Yes, human beings are also multicellular organisms. Let's find out what are the main parts of the flower. There are 4 main parts of flower. The thing which, the stalk, the little stalk which connects the
flower to the stem is called pedicel. Here, can you see? This part is pedicel. This pedicel is the short stalk by which flowers are connected to the stem. After this pedicel, there is a solen part here. This solen part is actually the thalamus here. This solen part is actually the thalamus, okay? And this thalamus is the part which bears 4 whorls. Can you see? The outermost whorl is this. This is called calyx. Outermost whorl is called calyx. And it consists of sepals. जो outermost part आपको नजर आता है flower का, अगर आप flower को बिल्कुल outermost part देखें, तो वो green color की छोटे छोटे से ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं. जब फ्लावर बड स्टेट में होगा तो उस बड स्टेट में होने की वजह से फ्लावर पूरा का पूरा जो बड होगी उसके ऊपर आपको ये सेपल्स नजर आते हैं. These sepals are to protect the flower in the bud state. After this, you can see this yellow part. This yellow part, यहाँ पे yellow part है और ये येलो पार्ट कुछ फ्लावर्स में ये रेड होगा, कुछ में वाइट होगा. सो दिस येलो पार्ट, दीज आर द पेटल्स और इसको हम कहते हैं करोला. ओके, ये जो करोला है ये कलर्ड पार्ट होता है एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ पेटल्स. पेटल्स जो होती हैं वो बहुत सारे इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करती हैं ताकि वो फ्लावर्स के पास आए और पॉलिनेशन हो सके. इसके अलावा आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है जिसे हम यहाँ पे एक्सपेंड करके, एनलार्ज करके भी शो कर रहे हैं. दिस होल पार्ट इज stamen. This stamen is the male reproductive part. Stamen, it consists of anther. This is anther and this is filament. ये filament होता है जो delicate सी stalk होती है. Yes, Alishba, I'll give you. So this is actually the anther. Anther produces pollen grains. Anther के अंदर pollen grains बनते हैं. These pollen grains are the male sex cells. So anther produces pollen grains and these pollen grains are the male sex cells. Now the female reproductive structure which is present inside the flower. This is female reproductive structure which is called carpel. Carpel, okay? It is called carpel. Here you can see the stigma. This is the stigma. Here this is style and this is ovary. The solen part is the ovary and ovary is explained here. You can see ovary here. This is the ovary. Ovary contains ovules. Ovary के अंदर आपको ovules नजर आ रहे हैं. These ovules are very important. ये जो pollen grains यहाँ produce हो रहे हैं anther के अंदर, ये pollen grains इन ovules के साथ combine होंगे और क्या बनाएंगे? Seeds बनाएंगे. Ovules are the structures which are present inside the ovary. जब ये pollen grains ovules के साथ combine होते हैं तो फिर ये seeds बनाते हैं और ये पूरी ovary यानी जब fertilization होगी, जब male and female sex cells आपस में combine होंगे तो फिर वो पूरी ovary fruit में convert हो जाएगी और जो ovules हैं वो seeds में convert हो जाएंगे. Okay?
So what is fertilization? Fertilization is the process during which male and female gametes join together, combine together to form a zygote. So let's find out some more details about the flower of Brassica campestris. The flower in Brassica is situated on a stalk which is known as pedicel. The tip of the pedicel bears thalamus. The floral leaves are arranged in 4 whorls on the thalamus. The 4 whorls of the flower are calyx, corolla, androecium, and gynoecium. Calyx is the outermost part, corolla is the colored part, androecium is the male reproductive part, and gynoecium is the female reproductive part. What is calyx? Calyx is the outermost whorl which consists of free sepals. 4 free sepals found होती हैं Brassica के flower में. The sepals are light green in young flowers, but they become yellow in mature flowers. The most important function of calyx is to protect the flower in the bud stage. What is corolla? Corolla is the second whorl of the flower. It consists of 4 free petals which are yellow in color. It is the most attractive part of the flower. Honeybees, butterflies, and other insects are attracted to the color which helps in pollination. जब honeybees और दूसरे insects flower पे आते हैं और flower पे आके वो petals से attract होते हैं, वो flower पे आके जो nectar होता है वो suck करते हैं. Nectar is a sweet liquid which is sucked by butterflies, honeybees and some other birds and insects. जब वो suck करने के लिए आते हैं nectar को, तो उनकी bodies के ऊपर ये yellow dust जो होती है ना pollen grains, ये उनकी bodies के ऊपर stick हो जाती है. और जब वो दूसरे flower के ऊपर nectar suck करने के लिए जाते हैं, तो वो pollen grains वहाँ पे जाके stigma के ऊपर उनकी bodies से transfer हो जाते हैं. This process of transference of pollen grains from anther to stigma is called pollination. What is pollination? The process of transference of pollen grains. The process of transference of pollen grains from anther to stigma is called pollination. Pollination कब होगी? जब pollen grains anther से stigma पे transfer हो जाएंगे, चाहे तो वो air के जरिए transfer हो जाएं या फिर वो insects की bodies के through transfer हो जाएं. Sometimes water के through भी pollination होती है. ठीक है? Whirl कहते हैं कोई भी चक्कर. Whirl is a चक्कर. ठीक है? So the process of transference of pollen grain from anther to stigma is called pollination. अगर same flower पे हो रहा है तो self pollination. Different flowers पे हो रहा है तो cross pollination. Now the next slide shows the next part of flower, which is androecium. Androecium is the third whorl of flower. It consists of 6 free stamens, and this part is called male reproductive part of the flower. The stamens are arranged in 2 circles. Outer circle में जो stamens मौजूद हैं वो short हैं और inner circle में जो stamens मौजूद हैं वो long हैं. Each stamen consists of anther and filament. एक stamen किन 2 चीजों से बना होता है? Anther से और filament से. Anther is the solan part where pollen grains are formed,
एंथर वो सूजा हुआ पार्ट होता है जहां पे pollen grains फॉर्म होते हैं. At the base of androecium, the dark green nectaries are present which produce nectar. मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे इंसेक्ट्स और बर्ड्स नेक्टर को सक करने के लिए आते हैं. ये नेक्टर क्या होता है? नेक्टर एक स्वीट लिक्विड होता है जो कि नेक्टरीज में फॉर्म होगा. Now the next part is androecium के बाद हमारे पास female reproductive part है that is called gynoecium. Gynoecium is the fourth and innermost whorl of the flower. It is called female reproductive part and it consists of carpels. Some flowers have only one carpel and other flowers have two or more carpels. Each carpel consists of stigma, style, and ovary. Stigma is the topmost part where the pollen grains are dropped. Style is the stalk which connects stigma to the ovary. And ovary is the swollen part where fertilization takes place. Ovary contains ovules. After fertilization, ovary converts into fruit and ovules convert into seeds. Here in this picture, I want to explain you the structure, the internal structure of the flower again. Can you see the pedicel here? Is pedicel clear? Pedicel is just the stalk which connects the flower to the stem. And what is thalamus? Can you see the thalamus? This thalamus is the swollen part. This is the thalamus. This is the thalamus. And this thalamus bears calyx. This is calyx and calyx consists of sepals. ये bud stage में flower को protect करते हैं. Can you see the petals? The petals are actually the colored parts and they are forming the corolla. Can you see these stamens? These are stamens and each stamen consists of anther and filament. Okay, and anthers, these are anthers. They produce pollen grains and pollen grains are transferred to the stigma. When pollen grains are transferred to stigma, this process is called pollination. और फिर pollen grains क्या करेंगे? यहाँ अंदर पहुंच जाएंगे. यहाँ से जो pollen grains हैं, वो यहाँ से अपनी एक ट्यूब इसके अंदर इंसर्ट करेंगे. वो ट्यूब यहाँ से होती हुई ओवरी के अंदर आएगी. स्टाइल से होती हुई ओवरी के अंदर आ जाएगी. जब यहाँ आएगी तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. उस फर्टिलाइजेशन की वजह से जो ओवरी है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स बन जाएंगे. So the outermost whorl is calyx. It consists of sepals. The second whorl is corolla. It consists of petals. The third whorl is androecium. It consists of stamens. It is the male reproductive part. The fourth whorl is gynoecium, which consists of carpel. And this carpel is also named as pistil. यहाँ carpel को कौन सा नाम दिया है? Pistil का नाम दिया है. And carpel consists of stigma, style, and ovary. I hope you have understood the structure of a flower. Is it clear? Okay, now I'm going to start up another part, that is fruit of brassica. हम brassica के fruit को भी देख लेते हैं कि कैसा होता है. The fruit of brassica is a long dry capsule. Brassica का जो fruit है वो long होता है, dry होता है और capsule like होता है. It contains many seeds and the seeds are small and light.
When the seeds are dispersed, they grow into a new plant. जब ये सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं, जब ये सीड्स स्प्रेड हो जाते हैं, तो ये सीड्स न्यू ब्रासिका प्लांट्स को प्रोड्यूस कर देते हैं. Now we have to start up another example of multicellular organisms, which is a multicellular animal. And the animal which is selected here in your book is frog. So are there any questions, or should we start up with the next topic? Frog. Yes, can you see the frog, the picture? Can you see the morphology of frog? We have studied about morphology. What is morphology? Morphology is the study of external structure or external features of living organisms. जब हम living organisms को externally study करेंगे, so that is called morphology. So let's study the morphology of frog. This is a very beautiful picture of a frog. It is very colorful and you can see all the bright features of a frog. Moving on to the next slide. Morphological features of frog. What are the features of frog? Frogs can live both on land as well as in fresh water. This is the picture which is showing an adult frog. You can see the frogs are found on land as well as in fresh water. It means frogs are amphibians. What are amphibians? Amphibians are the organisms. Yes, this is a very detailed topic. Amphibians are the organisms which live both in water as well as on land. So the frog belongs to class Amphibia of phylum Chordata. The most common species of frog which is found in India and Pakistan is Rana tigrina. The frog you can see in this picture is Rana tigrina. This is the scientific name of frog. Frogs can live both on land as well as in water, and the most common species which is found in South Asia is Rana tigrina. They do not have constant body temperature. Frogs का body temperature constant नहीं होता. ये अपना body temperature अपने environment के साथ-साथ, environment के temperature के साथ-साथ change करते रहते हैं. Human being के बारे में भी आप study करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर. लेकिन पहले हम frog को क्यों study कर रहे हैं? फ्रॉग को हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि फ्रॉग के बहुत सारे सिस्टम्स ह्यूमन सिस्टम्स के साथ बहुत हद तक मैच करते हैं. और जब हम फ्रॉग को एक स्मॉल एनिमल को स्टडी कर लेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, हम उसको अंडरस्टैंड करने में हमें कन्वीनियंस होगी. सो वी आर स्टडीइंग अबाउट फ्रॉग. They do not have constant body temperature. इनका body temperature एक जैसा नहीं रहता. इनका body temperature इनके environment के temperature के साथ change हो रहा होता है. इसलिए हम इनको cold blooded या poikilotherms कहते हैं. Cold blooded or poikilotherms are the organisms which cannot regulate their body temperature at a fixed point. They change their body temperature with the temperature of their environment. Number 3, you might also have noticed the changes in color of the frogs while they are in grasses and on dry land.
frogs किसी हद तक अपनी skin के color को change कर सकते हैं, and this ability is called camouflage. What is camouflage? Camouflage is the ability of organisms to change the color of their skin ताकि वो खुद को अपनी enemies से hide कर सकें. The protective coloration is called mimicry. ये जो protective coloration होती है इसको हम mimicry का नाम देते हैं. Point number 4. You may also know that the frogs are not seen during peak summer and winter season. बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी में frogs हमें नजर नहीं आते. Frogs are hibernated during the extreme summer and extreme winter conditions. This is called estivation and hibernation. Summer sleep को हम estivation कहते हैं. Frogs अगर summer season में खुद को छुपा लेंगे तो वो estivation में हैं. और अगर frogs winter season में खुद को bury कर लेंगे mud के अंदर तो उसको हम hibernation कहते हैं. Let's find out what are the external features of frog in detail. Frog is an amphibian. It can live both in water as well as on land. It swims in water and hops on land. It has two short forelimbs and two long hind limbs. आगे के जो इसके limbs होते हैं दो, वो short होते हैं और पीछे वाले दो limbs जो होंगे वो hind limbs long हैं. It has two bulgy eyes. Frog की eyes आपने देखा है bulgy होती हैं, यानी बाहर की तरफ protruded होती हैं. Why are the eyes of the frog protruded? Because frogs do not have necks. Frog की neck नहीं होती, तो वो अपनी eyes को ही चारों तरफ घुमा के अपने पीछे की तरफ sides में देख सकता है. The neck is absent and its skin is slippery and loose. आप frog को जब अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह आपके हाथ से slip हो जाएगा. The head is conical. The head of frog is conical in shape, cone-shaped. Conical means cone-shaped. And the tympanic membrane is present behind each eye. हर eye के पीछे एक tympanic membrane है जो कि ear का काम करती है. इसको हम eardrum भी कहते हैं. The tip of the snout has two external nostrils which are to inhale the air. Snout के ऊपर दो external nostrils होते हैं जिसके जरिए frogs air को inhale करते हैं. Frogs do not have tails. Okay. So this slide has already been explained. Let's find out some of the morphological features here. Can you see the eye of frog? These are protruded out. There is no neck. There is no tail. You can see the mouth of frog. The mouth is conical. The head is conical. The tympanum is the tympanic membrane, which is the eardrum. The upper arms, forearms can be seen. You can see the fingers. The hind limbs are long and you can see the web. ये web क्यों होता है? क्योंकि ये जो web membrane होती है, ये frog को swim करने में help करती है. You can see the thigh and the shank of the frog. So this is all about morphological features of frog. Morphology of frog has been done. What is hibernation? Hibernation is the process when frogs bury themselves in the mud and they stay there throughout the winter. जब frogs खुद को bury कर लेंगे mud के अंदर और पूरी winter season में वो mud के अंदर ही गुजारेंगे, so that is called hibernation. This is also called winter sleep, and during hibernation they dissolve fat bodies which are present in their bodies. क्योंकि hibernation winter sleep है, तो इस hibernation के दौरान वो बाहर निकल के अपना food search नहीं कर सकते.
इसलिए वो फैट बॉडीज को डिसॉल्व करते हैं और फैट्स को अपने फूड के तौर पे कंज्यूम करते हैं, यानी उनकी बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी उनको ये फैट बॉडीज प्रोवाइड करती हैं. Have you got this part? Have you understood the morphology of frog? The next topic would be digestive system of frog. This is anatomy. So this would be the next slide. I will show you up and I will explain you up the digestive system of frog. So during the next class, inshallah, I'll explain you two systems of frog, digestive system and respiratory system. Okay. So it's time to wind up. Thank you so very much, students. I'm ending up here. Right now, I'm not giving you any homework because Saturday is your test and the syllabus for the test is, I think, already have been shared with you. Chapter 2, meiosis तक chapter 2 आएगा आपके टेस्ट में. MCQ based test होगा LMS पे और meiosis is the last topic. Chapter 2 के सारे topics शुरू से लेकर meiosis तक included होंगे. So you have to prepare for the test. I'll give you the self study inshallah in the tomorrow's class ताकि वो आप टेस्ट की प्रिपरेशन के बाद उसको कर सकें. और कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी आगे के जो हमने अभी तक जिनको टच नहीं किया था. ओके, तो थैंक यू सो मच. आई एम एंडिंग अप. Allah Hafiz to all my dear students.